Hey everyone, welcome back. It's Jojo. Still at home. I'm still at home, and this is probably the last session I'm doing before I travel again. And I see all the comments about Seedhe Maut, and I just want to make clear that, about lunch break. I just want to make clear that I had a huge backlog of songs because a lot of things released in the month that I was on holiday and traveling, and I could not get to those songs because when I started recording sessions again, it had already been a while since those released, and lunch break will be finished. You just have to bear with me and wait for the videos. They've all been recorded. Some of them I'm recording in this session, and they will be spaced out. So there won't be a lunch break every day. There'll be a gap of 2, 3, sometimes 4 or 5 days between each one, but the mixtape will be finished. It will. Okay, so now that being said, the last video I finished at was Pushpak Viman, and up next hai Dikkat and Kya Challa. And if I'm being honest, there were some things in that video which, when I was editing it and watching it, I was like, thinking, should I put this, should I edit this out? Because I can't help being honest about like my thoughts on a particular line or some sentiment that was expressed, right? So I just want to say that at no point am I trying to, um, say anything against anyone's artistic expression. It is what it is, and it is just me giving my personal like that's my character, my personality, my thoughts, right, on whatever was said. So that's all it is. It's just my opinion. So okay, wo sab ho gaya. Ab Dikkat Kya Challa, and then maybe if there's time, we can also do Fun Nekha in this video. I'm not promising as I start recording, but we'll see as it goes, because I've realized that I'm spending a lot of time on each song, and that's also what's slowing down my progress through the mixtape. So you all keep complaining about oh, you're too slow, you're too this, you're too that. But I give every song its due, its time. I go through the lyrics. All of that takes time. And sitting for a recording session, you need to be emotionally in a place where you're not distracted by 10 things, and your mind is able to completely focus. That when you're sitting and recording, it takes a lot out of you emotionally and mentally. So I've actually taken a couple of days break and come back to this because I want to be able to do each song justice. And I don't think that kind of like time spending on each track happens. So maybe that's a good thing or bad thing. I was thinking about it, and I was like, maybe I shouldn't spend so long on each track, listen to it, just give 3 lines of what I felt or thought about it and move on to the next one. That will maybe get me through the mixtape faster. So maybe that's what I'll do today. Let's see. I will I will only be able to tell once I've heard the song and I know how much time I want to spend discussing it or whatever. So okay. All those disclaimers aside, now let's just get into this. It's called Dikkat. I like this word. क्या दिक्कत है? It's very north word. I think in the south they don't use it so much. ठीक है. It's lyricist Abhijay Negi. Oh, so is it only encore on the vocals? Composer Kam Siddhant Sharma. Composer Budhayan Kundu. Oh, Budhayan, who's that? Oh, Hurricane. Oh, okay. ठीक है. Let's get into it. I think it's only encore. 1, 2, 3, play. मुझे नहीं है कोई दिक्कत, मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली मेरा घर, इट्स लिट अप जैसे कोई दिया असी सो क्लियर कि नहीं है दिक्कत, बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब, नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत, जब वो साथ वाले बकचोद बोले भाई फिकर है दोनों भाई ने डर गिर के संभल कर पे करे लाइफ फिगर, अरे बनना बिगर है चंबा बिगड़ ऊंच नीच के लोग आज भी होती बीड़ी सोच के हैं बहुत लालची, खाते जा रहे हम जैसे कोई बोले मालची, पर हमारे बिना कैसे करे कोई क्रांति, लुकिंग बैक एट माय लाइफ आज पीता दारू जाके सीपी वाले माय बार, मुझे साइफरों में बोले लौंडे का बार्स, कभी सोचा नहीं तो मिलेगी ये हाई पाच, करेगा भाई राज उसके प्राइस बहुत है, हूँ पहले जैसा नहीं कि मेरे पे टाइम बहुत है आगे, लेकिन दिक्कतों से फाइट हो रहा है, जब बीटी सारे दूर जब माइक ऑन है लाओ और आई डोंट बैक डाउन, करे जाऊँ दिक्कतें पेन डाउन, कभी कभी फील करूँ लेफ्ट आउट, फील करूँ स्ट्रेस चाहे फील करूँ बेस्ट, हम अ बीस्ट ऑन दिस बीट्स भाई it is what it is, बहुत shit दफना है, got a week on a knees, उसे दिक्कत ना है, मेरे जी सारे जी रहे हैं, बोल क्या चल रहा है, रूल है बजो और सोच है बस समझ रहा है क्या दिक्कत, मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली मेरा घर, it's lit up जैसे कोई दिया असी सो क्लियर कि नहीं है दिक्कत, बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब, नहीं है दिक्कत.
दिक्कत जब तक पेन में है जंग मन बोले करे नेक्स्ट लाइन स्पिट कप एंग्जाइटियां करे जा पीक जैसे ठुल्ला पकड़ के मांग रहा है रिश्वत गवा मैं साइफर में लॉन्डो के साथ दैट I'm already better than बड़प्पन लाए मेरा बड़ा पेन ने तकिया जेब में धरा पेन चलाया नहीं जाए लेकिन कानून बनाई पुत गवार इन गवर्नमेंट भगवान से डरो इन लोगों को बोलो कि ताकत के लालच में अपने ही घर के नहीं लोड़े लगाते इलेक्शन में रोड़े बनाते 2 हफ्तों में गड्ढे हो जाते अब लोगों की सोच है कि ऐसा ही होता है यहाँ पे ऐसा ही चलता है इनसे पूछ मेरा घर का है भगवान मुझसे खफा है लेकिन मुझे नहीं है कोई दिक्कत मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली मेरा घर इट्स लिट अप जैसे कोई दिया असीत सो क्लियर कि नहीं है दिक्कत बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब नहीं है दिक्कत Loved it. I can't decide. Is this the most vibey track of the mixtape? Is it? Is it? I haven't heard the rest of the thing. I've liked even W. I've liked Hostla. I mean, but this one is yeah. I think this one is the best. I just loved it. The vibe, the hook. What is happening on the hook? This is a very different like encore voice. No, I mean I'm sure he's used this tonality somewhere before, but completely the way he did in an entire hook, I don't think I've heard that. Can't remember if I've ever heard that before. But what a vibe, like from the get-go. Loved it. Listen, it was the music also for me, like Hurricane, right? Hurricane and it says Siddharth, so calm. Beautiful. What a beat. Loved. I just want to rewind a little bit and see where that there was a that ooh that's going on in the back is so good. So good, so good. The entire arrangement, the entire is so good. And you know the funny thing I'm seeing? What? So O25 से लेके like पूरा काम का verse, फिर 133 से लेके पूरा that whole section, it says most replayed, most replayed, most replayed. Like that's how good this song is. It's just so good, so good. What are Calm's flows? How how do they break up their sentences like that? How do they flow like that? I'm always amazed every time I listen to a Seedhe Maut track, and I've been listening to a lot of them lately. Every time I'm amazed at how they flow. Just I just can't. I just can't. What? Okay, I mean, gotta go to the lyrics, right? Can't not. I loved it. Okay, let's just begin. Encore. मुझे नहीं है कोई दिक्कत. मैं घूमूं स्कूटियों में. I loved स्कूटियों. Has happened. है दिल्ली मेरा घर. It's lit up. जैसे कोई दिया. I see it so clear. कि नहीं है दिक्कत. बस ये बता दे मिलना होगा फिर कब नहीं है दिक्कत. दिक्कत I'm thinking like बॉम्बे वगैरह में नहीं यूज करते इतना ये वर्ड ना. जैसे क्या मुश्किल है या whatever. दिक्कत बहुत नॉर्थ में यूज होता है. That was the first thing I thought. हाँ, so verse 1 calm. नहीं है दिक्कत जब वो 7 साले और भूले भाई फिकर है दोनों भाई निडर. I like it. Yeah, there is a certain carefreeness that comes with being with your people, है ना. गिर के संभल गए पर गिर के संभल गए पर करे लाइफ फिगर. नाइस. और है बनाना बिगर है अचंबा बिक्कत. वाह. ऊंच नीच खेले लोग आज भी होती बीटी सोच के है बहुत लालची. या दैट्स ट्रू. खाते जा रहे और हम जैसे कोई ये बोले मालची. यस. पर हमारे दिस इज वर्ड आई हर्ड फर्स्ट टाइम. मालची. पर हमारे बिना कैसे करे कोई क्रांति. ओहो. नाइस. Looking back at my life, आज पीता दारू जाके सीपी वाले my bar. I've seen this my bar. Have I gone there? No, I've gone to एक बार. I haven't gone to my bar. मुझे साइफरों में बोले लौंडे कहाँ है बाज. हाँ. ओके. कभी सोचा नहीं था मिलेगी ये हाइप आज. करेगा भाई राज उसकी प्राइस बहुत है. हूँ पहले उसकी प्राइस बहुत है. People don't realize that. हूँ पहले जैसा नहीं कि मेरे पे टाइम बहुत है. आया आगे लेकिन दिक्कतों से फाइट और है. Yeah, getting there is difficult. Staying there is even more difficult, है ना. जाए बीटी सारी दूर जब ये mic on है. Love it. What is this? His flows here, just his like
vocal throw and like just so smooth. Love or I don't back down. करे जाऊं दिक्कतें पेन डाउन. कभी कभी फील करूं लेफ्ट आउट, फील करूं स्ट्रेस चाहे, फील करूं बेस्ट. आई एम अ बीस्ट ऑन दीज बीट्स. यस यू आर. भाई इट इज व्हाट इट इज. बहुत शिट दफनाया है. गॉट हर वीक ऑन हर नीज. उसे दिक्कत ना है. मेरे जी सारे जी रहे हैं. बोल क्या चल रहा है. मेरे जी सारे जी रहे हैं. बोल क्या चल रहा है. रूल है बजो और हंसो जब सीधे मौत बज रहा. क्या है दिक्कत. यार मुझे नहीं है कोई दिक्कत. मैं घूमूं स्कूटियों में है दिल्ली में. ओके नेक्स्ट वर्स 2 ऑन कोर. अच्छा सो व्हाई डज हिज वर्स लुक शॉर्टर. आई मीन I don't know, maybe the time is same, but okay, looks shorter here in the lyrics. जब तक पेन में है जंग, मन बोले करे नेक्स्ट लाइन स्पिट कब. एंजाइटी यहाँ करे जाए पीक जैसे ठुल्ला पकड़ के मांग रहा है रिश्वत. Listen, every time I got stopped by a cop, it was usually for speeding, which you can't not do when the speed limits are 50. Like, what is that's just ridiculous. I mean, what is like, I can't even brag that I got caught speeding because the speed limit is 50. It's not like it's 200. So, anywho, every time I got caught, I would just ask them to make the challan, but they were looking for rishwat, which I never understood. I didn't know. The dumbass. Anyway, so whatever. Gava mein, cipher mein london ke saath that I'm already better than. Badappan lai. Okay, so he's also doing cipher. Badappan lai mera bada pen. Wow. Neta ki hai जेब में धरा पेन. चलाया नहीं जाए लेकिन कानून बनाए. Okay, got it. He put the gawar in government. That's true. If you're talking about the Delhi government, then yes. भगवान से डरो. इन लोगों को बोलो कि ताकत के लालच में अपने ही घर के नहीं. इलेक्शन में रोडे बनाते 2 हफ्तों में गड्ढे हो जाते. Listen, I have no sympathy for Delhi people if they're going to vote for AAP. Sorry, I'm getting political, but yeah. अब आप ऐसे ही लोगों को लाओगे तो यही होगा ना. अब लोगों की सोच है कि ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऐसा ही चलता है. इनसे पूछ मेरा घर कहाँ है. भगवान मुझसे खफा है लेकिन मुझे नहीं है कोई दिक्कत. लवली यार, आई लाइक दिस सॉन्ग. इट्स सच अ वाइब. ये तो लूप पे जाएगा फॉर श्योर. It's nice. I think you guys saw in the previous reaction. I like Pushpak Viman more than Peace of Mind. Peace of Mind was not really my vibe. I also enjoyed parts of Pushpak Viman, not in totality, but this completely changed my mood. I like it. Vibes. Okay, let's move to Kya Challa, which he also dropped the name of the track in this track in his verse, है ना? So okay, next Kya Challa. Let's go. What track number is it? 7. 1, 2, 3, play. Hey, क्या बोलते मंडली क्या चल रहा है? Hey man, what's up man? What y'all doing in Goa and shit man? Looking like all Mexican kingpin and what that? Ken आणि Ryu आणि Batman Blanca. कळलं काय? जब से उम्र 15 घूमा दोस्तों के साथ बोल क्या चल रहा है. लोग बोले बड़ा बंदा है, मेरे साथ वाले बोले ये क्या चल रहा है. सीन बड़ा फट रहा है भाई क्या चल रहा है. अबे नाम चल रहा है. मेरे मुंह का कलर संतरा तो मैं पानी पी रहा हूँ और कुछ ना चल रहा है. Last name Seedhe Maut, first name तेरा भाई bro, let's get it. 7 3 4 है भाई जब भी हो लड़ाई हाथ पहले जोड़े. इतनी सारी जिम्मेदारी छाती में दबा के चलते लौंडे के नो वंडर ये शराबी. अगर वाले सोचे बेटा कर रहा काम, मेरे बाप को नहीं पता क्या चल रहा है. जब से उम्र 15 घूमा दोस्तों के साथ बोल क्या चल रहा है. लोग बोले बड़ा बंदा है, मेरे साथ वाले बोले ये क्या चल रहा है. सीन बड़ा फट रहा है भाई क्या चल रहा है. अबे नाम चल रहा है. मेरे मुंह का कलर संतरा तो मैं पानी पी रहा हूँ और कुछ ना चल रहा है. तो लड़ते मैं तब भी नहीं था चिंदी. कुछ लोग बदल के फायदा पुसी भी के बिल्ली. नेशन फटा थोड़ी बांसुरों की उंगली. नहीं होती सीधे मत किसी टेल में गिनती. यहाँ बताऊँ कि पहली चीज हम नहीं है वैक रैपर, दूसरी हम रहते नहीं इस ग्रैपर. तीसरी की कमी कभी छोड़ी नहीं है लौंडे किसी ट्रैक पर. 50 गाने वार्ड में बरम होते नहीं है सहमत छोटे भाई मेरा काम चल रहा है. जब से उम्र 15 घूमा दोस्तों के साथ बोल क्या चल रहा है. लोग बोले बड़ा बंदा है, मेरे साथ वाले बोले ये क्या चल रहा है. सीन बड़ा फट रहा है भाई क्या चल रहा है. अबे नाम चल रहा है. मेरे मुंह का कलर संतरा तो मैं पानी पी रहा हूँ और कुछ ना चल रहा है. Just, I can't. Listen, what is that hook? अबे नाम चल रहा है. I love it. At the last, I thought I cannot. First, I thought he's saying moo. And I was like, why is your moo orange? Why? And then I heard it clearly. The second time, I'm like, cha.
TMI has happened. So, loved it. Okay, this is probably the shortest track right now that I've heard on the mixtape, है ना? 1 minute 41 seconds. बहुत जल्दी खत्म हो गया. It was such a vibe. What? First of all, can we just appreciate Calm as a producer? What is this beat? The the horns. I honestly genuinely think that whenever a real instrument is used, whenever that happens, this is personally for me, it may be different for you, but for me, it's the presence of a real instrument, a real musical instrument being played that just takes the music to the next level in a track for me. Always, always. Whether it's keys, guitars, strings, whatever, horns, anything, flute, any wind instrument, anything, it just elevates the music for me by like 5 notches. Always. And that is exactly what happened here. It's so like I can't tell you the power of live music when you're standing in front of a live band and vibing to the musicians doing their thing. That's the feeling I get whenever I hear a real instrument on a track. So I think when like Calm, for example, is doing that here, Umer does a lot of it, Jokhe, of course, and Karan Kanchan does it sometimes, not sometimes, quite a lot as well. I love it. I love it. This was a vibe for me, and both they're like that they had that very like easy throw in their voice at this, which is just like हाँ बस हम chill कर रहे हैं सोफे पे और गाना record करते हैं like mic हाथ में पकड़ के. It was just that like they're so relaxed in their vocal like delivery. It's too cool. It's just too cool. What was it? We have to go to the lyrics because they were so funny. And let me find them. What did he say? Pehla first name Seedhe Maut, last name Tera Bhai, something like that, no? Hilarious. One sec. Okay. Someone asked me, do you have a cold? Yes, I have a perpetual cold. My nose is always blocked. Maybe I have one of those deviated septum things. I don't know. Okay, so क्या बोलती मंडली क्या चालू है this whole Goa intro bit, Goa accent intro, who was that? Who was talking? Do you know? Because it's not written here in the credits. Hey man, what's up, man? What y'all doing in Goa and shit, man? Looking like all Mexican kingpin and what that. Can I need you? I need Batman Blanco. Katla kai. What is Katla kai? Katla kai. Katla kai. Whose voice was that? I don't know. यहाँ पे भी नहीं लिखा. फाइन, कोरस इज encore and calm. जब से उम्र 15 है, घूमा दोस्तों के साथ, बोला क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. लोग बोले बड़ा बंदा है, मेरे साथ वाले बोले क्या चल रहा है. सीन बड़ा बड़ा फट रहा है. भाई ये क्या चल रहा है, ओए अभी नाम चल रहा है. क्या चल रहा है. संतरा है तो मैं पानी पी रहा हूँ और क्या और कुछ ना चल. What? Where? From where? कहाँ से आया ये thought? क्या आप गए थे लिखते टाइम लू गए थे और आ गया? Like what? How? How did this line enter here? Is my question. So funny. So random. So random. The randomness is the awesomeness. That's what. Yeah, it's just hilarious. Last name Seedhe Maut, first name तेरा भाई. हाँ, तेरा भाई से. Bro, let's get it. Let's get it. 7 3 4 है भाई. जब भी हो लड़ाई, हाथ पहले छोड़े. Bro, get it. इतनी सारी जिम्मेदारी छाती में दबा के चलते. I feel the pressure. They talk about it in every song. बहुत like responsibilities का pressure है ना. लौंडे कहे no wonder ये शराबी है. Oh, dependency is not great. The AC off. घर वाले सोचे बेटा कर रहा है काम. मेरे बाप को नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है. Hilarious. Okay. जब से उम्र 15 है, although there's a lot of things छिपा हुआ उस line में भी, like because he's saying, okay, I don't know, maybe I'm reading too much into it, but ठीक है. जब से उम्र 15 है घूमा दोस्तों के साथ, बोला okay course. Then verse 2 calm. बहुत ही छोटे-छोटे वो बहुत ही छोटा गाना. I'm just saying this could have been longer. Both of you should have just added one more verse each. It was such a vibe. Okay, जब जेब में चिल्लत है मैं तब भी नहीं था चिंदी. Oh nice. कुछ लोग बदल गए for that. नेशन फट्टा थोड़ी बाउंसरों की उंगली है. What? नेशन तोड़ी बाउंसरों की उंगली. Did he? Oh what? They fought with someone. नहीं होती सीधे मौत की किसी टीयर में गिनती. अच्छा, अब बताऊं क्यों. पहली चीज हम नहीं है वैक रैपर. दूसरी हम रहते नहीं इस ग्रापर. तीसरी की कमी
कभी छोड़े नहीं ये लौंडे किसी ट्रैक पर। है 50 गाने वॉल्ट में पर हम होते नहीं हैं सहमत, छोड़े भाई मेरा काम चल रहा है। व्हाट? 50 गाने और हैं वॉल्ट में, वेरी नाइस, गुड टू नो। हाँ, मुझे सोच के ही स्ट्रेस हो रहा है। When they drop it, what will I do? Okay, anyway, what like it's just too chill. It's too chill. It's too chill for words. I loved it. What's not to love? Okay, I don't know. So listen, compared to the last two, these two have taken my heart. Both the tracks. I am just loving them. अब मैं दिक्कत को लूप पे नहीं करूंगी because दिक्कत के बाद ये भी आएगा और फिर ये दोनों गानों का लूप चलेगा. Has to happen. And no, I'm not gonna cover Youngi's song. I'll get to that in the next video because अभी मुझे break लेना पड़ेगा. It's too awesome. I'm gonna loop both the tracks once, have some chai, take a little 10-minute breather, and then come back for tracks 8 and 9. Yeah. Fanne Khan and First Place. Love it. See you then. Live long and prosper. जब से उम्र 15 घूमा दोस्तों के साथ, बोल क्या चल रहा है। लोग बोले बड़ा बंदा है, मेरे साथ वाले बोले ये क्या चल रहा है। सीन बड़ा बड़ा फट रहा है भाई, क्या चल रहा है, अब नाम चल रहा है।